Hello everyone, welcome to our channel You Learn with Kazi. This is Robinson Crusoe lands on a deserted island. From English, lesson number 8, standard 4th, Fairy Candle Book, semester 1. It's lesson time. Read with me. I do not know what happened to my companions, but I was lifted by the waves and carried to the shore. I lay quietly for some time, but as soon as I felt better, I knelt down and thanked God for saving my life. I then walked about trying to find my comrades, but found none of them. I realized that I was the only one saved. All the others must have drowned in the sea. I looked around and thought what I should do next. I had no food or clothing to change into, and I was thoroughly wet. It was getting dark too. There might be wild animals on the island, and so I wondered where I should spend the night. Suddenly, I spotted a suitably tall tree. I climbed it and slept on its branches. When I awoke, it was a bright day. The sky was clear. As I looked out towards the sea, I was surprised to see that the ship had been lifted during the night, and it was not far from the shore. When the tide was low, I swam towards the ship. I saw a small piece of rope hanging over the side of the ship, so I took hold of it and pulled myself on board. I went to the storeroom in search of something to eat. Luckily for me, the food was dry. I ate as I was very hungry. Next, I realized that I would need some sort of a boat to carry a few things from the ship to the shore. I found some planks of wood, tied them together with a rope, and made a raft. Then I put 3 big chests onto it. Into these chests I filled food, clothes, tools, guns, gunpowder, and swords. Now I had enough cargo on the raft for one journey. I also found a dog and a parrot on board the ship, so I took these animals along to keep me company. Luckily, the sea was calm and the tide had receded. I managed to reach the shore safely. Now I needed to keep my goods safely, so I made a small tent with a sail I had brought from
the ship. I carefully placed all the boxes in it when I fell asleep. The next day, I climbed a steep hill and saw that I was on an island. Then was not a house or even a person in sight. I made another raft and transported more goods from the ship to the island. I made 11 trips in all, and each time I brought back different things that I might need: sails, cables, bedding, ropes, canvas, a hammock, food, ink, paper, pens, compass, gold, and silver too. Soon after I completed my 11th trip to the ship, a terrible storm arose. The ship was seen no more. I was now alone on this strange island. My next plan of action was to build a house. I started looking for a proper place for my house. I kept in mind that it had to be built in a place which was near fresh water. Secondly, it had to be safe from any danger. Thirdly, it should be protected from the heat of the sun. Lastly, I should have the view of the sea in case any ship passed close to the island. I would then not miss a chance to be rescued. I finally found the ideal place I was looking for. It was on level ground on the side of a hill facing the sea. A stream of fresh water freely flowed close by. There was a cave nearby that I could use as a storeroom. I made a strong fence all around the spot and then put up 2 tents. Every day I would go out with my dog and my parrot to discover different parts of the island. Explanation of the lesson: Robinson Crusoe lands on a deserted island. I do not know what happened to my companions. मुझे पता नहीं कि मेरे companions को क्या हुआ था. When I was lifted by the waves and carried to the shore. Waves ने इसे जाकर एक शोर पर उसको कैरीड करके रख दिया था. आई ले क्वाइटली फॉर सम टाइम. मैं खामोश रहा. थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं तो भी हूँ समंदर के पास, लेकिन मैंने गॉड का थैंक गॉड किया, सेविंग हिज लाइफ. उसका लाइफ बच गई इसलिए. और फिर मैं अपने कंपेनियंस को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा. तो तब मुझे पता चल गया कि मैं ही अकेला बच गया हूँ और बाकी सब बह गए हैं. फिर मैं इधर उधर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरे पास कोई फूड भी नहीं था, क्लोथिंग भी नहीं था कि मैं चेंज करूँ. मैं कम्प्लीटली पूरा वेट हो चुका था, गीला. फिर डार्क हो रही, शाम हो रही थी और वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते थे आइलैंड पे. मुझे डर लग रहा था, तो मैं कहाँ पर नाइट स्पेंड करूँ मैं सोच रहा था. सडनली उसने एक टॉल ट्री देखा और वो चढ़कर उसके ब्रांचेस पे सो गया. जब वो उठा तो सुबह का दिन था, स्काई बहुत क्लियर था और वो समंदर के ओर देख रहा था. उसने देखा कि एक वहाँ पर शिप खड़ी हुई है.
ship had been lifted during the night और it was not far from the shore. शोर से ज़्यादा दूर नहीं थी, करीब में थी. When the tide was low, tide means rise and fall in the level of sea. तो tide was low, I swam towards the ship. जब पानी कम होने लगा तो मैं शिप की ओर तैरता हुआ गया. I saw a small piece of rope. वहाँ पर मैंने एक रोप देखी, स्मॉल पीस, छोटी सी रोप देखी. ओवर द साइड ऑफ द शिप. और मैंने आई टुक होल्ड ऑफ इट एंड पुल्ड माई सेल्फ ऑन बोर्ड. मैंने उसको पकड़ा और अपने आप को बोट की तरफ लेकर गया. आई वेंट टू द स्टोर रूम में गया अंदर. समथिंग उसको खाने के लिए मिल गया, थोड़ा सा ड्राई चीज़ खा लिया क्योंकि वो बहुत भूखा था. फिर उसने रियलाइज़ किया कि मुझे बोट में कैरी करने के लिए कुछ सामान भी चाहिए है. तो आई फाउंड सम प्लैंक्स ऑफ वुड. उसने प्लैंक्स देखा, नैरो वुडन बोर्ड्स, तख्ते, और टाइड देम टुगेदर विथ अ रोप. उसने रोप से उन्हें बांध दिया. एंड मेड अ राफ्ट. तो राफ्ट मीन्स अ फ्लैट बोट. ऐसी एक ये लकड़ियाँ जमा किया, तख्ते और रस्सी से बांध के एक फ्लैट राफ्ट, उसने फ्लैट बोट बना लिया. फिर उसने उसमें आई पुट 3 बिग चेस्ट मीन्स लार्ज बॉक्सेस. ये जो 3 बॉक्सेस है उसमें उसने रखा. और इनटू दिस चेस्ट आई फिल्ड. इसमें मैंने खाना, कपड़े, टूल्स, गन पाउडर, सूट्स, तलवार, ये सब मैंने रखा और डब्बों में. एंड आई हैड इनफ कार्गो ऑन द राफ्ट फॉर 1 जर्नी. एक जर्नी के लिए मेरे पास बहुत सामान हो चुका था. आई ऑल्सो फाउंड अ डॉग एंड अ पैरेट ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप. मैंने डॉग और पैरेट को भी देखा शिप पर. सो आई टुक दिस एनिमल्स अलॉन्ग टू कीप मी कंपनी. मैंने इन्हें साथ ले लिया कि मुझे कंपनी मिल जाए इसलिए. लकीली द सी वॉज काम एंड द टाइड हैड रिसीडेड. अच्छी किस्मत थी कि समंदर शांत हो गया और टाइड्स जो थे वो भी डिक्रीज़ हो गए. फिर मैंने अपने आप को सेफली रखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सारे गुड्स जो है कैरी किया था. आई मेड अ टेंट विथ अ सेल. मैंने एक टेंट बनाया. सेल मीन्स शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ यूज इन शेप टू ट्रैवल बाय विंड फोर्स. उस तरीके से इसने बनाया. और आई हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप. आई केयरफुली प्लेस्ड ऑल द बॉक्सेस इन इट. मैंने सारे बॉक्सेस इसमें डाले और मैं सो गया. नेक्स्ट डे आई क्लाइम्ड अ स्टीप हिल एंड सॉ दैट आई वॉज ऑन द आइलैंड. मैंने दूसरे दिन देखा कि मैं आइलैंड में हूँ और देयर वॉज नॉट अ हाउस और इवन अ पर्सन इनसाइड. कोई घर नज़र नहीं आ रहा था, कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा था. आई मेड अनदर राफ्ट. उसने अनदर शिप बनाई एंड ट्रांसपोर्टेड मोर गुड्स. ज़्यादा सामान लिया फ्रॉम द शिप टू द आइलैंड. और इस तरीके से मैंने 11 ट्रिप्स मैंने 11 ट्रिप्स किया. और ईच टाइम मैंने आई ब्रॉट बैक डिफरेंट थिंग्स जैसे कि सेल्स, केबल्स, बेडिंग, रोप्स, कैनवस, हैमॉक, टाइप ऑफ बेड मेड विथ नेट. वो भी लिया उसने. पेपर, इंक, पेन्स, कंपास, गोल्ड, सिल्वर, ये सब लिया साथ में. सून आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई 11 ट्रिप. मैंने जब 11 ट्रिप कंप्लीट किया, अ टेरिबल स्टॉर्म आया. बहुत ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आया अराउंड एंड द शिप वॉज सीन नो मोर. और अब मेरी शिप मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी. आई वॉज नाउ अलोन ऑन द स्ट्रेंज आइलैंड. अब मैं पूरी तरह अकेला रह गया स्ट्रेंज आइलैंड पे. और मेरा दूसरा प्लान ये था कि मैं एक घर बनाऊँ. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस फॉर माई हाउस. मैंने देखा कि एक प्रॉपर प्लेस अगर मिल जाए तो मैं अपना घर बनाऊँ. आई केप्ट इन माइंड दैट इट हैड बीन टू बिल्ड इन अ प्लेस विच वॉज नियर फ्रेश वाटर. और मैंने सोच लिया था कि कहाँ पर घर बनाना जहाँ पर फ्रेश वाटर हो. और दूसरी बात ये है कि इट हैड टू सेफ फ्रॉम डेंजर से सेफ हो. थर्डली ये था कि प्रोटेक्ट हीट ऑफ द सन से प्रोटेक्ट हो मेरा घर. और लास्टली आई शुड हैव अ व्यू ऑफ द सी. और मुझे सी का व्यू भी चाहिए था. इस तरीके से मुझे घर बनाने का था. इन केस एनी शिप पास क्लोज टू द आइलैंड. अगर कोई शिप आइलैंड से पास होती है तो आई वुड देन नॉट मिस अ चांस टू बी रेस्क्यूड. और मैं चांस नहीं मिस करूँगा कि मुझे कोई बचा ले. आई फाइनली फाउंड द आइडियल प्लेस. मैंने एक जगह ढूंढी जहाँ जो मैं तलाश कर रहा था. इट वॉज ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन द साइड ऑफ द हिल फेसिंग द सी. वो लेवल ग्राउंड की तरफ साइड, हिल फेसिंग द सी की तरफ था. और स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर फ्रीली फ्लोट क्लोज बाय. बहुत अच्छा पानी भी उधर से फ्रेश वाटर बह रहा था. और देयर वॉज अ केव नियर बाय. केव था दैट आई कुड यूज़ एज अ स्टोर रूम. केव ऐसा था कि ये स्टोर रूम की
कि जैसे उसे यूज़ कर सकता था। और आई मेड अ स्ट्रॉन्ग फेंस ऑल अराउंड द स्पॉट एंड देन पुट अप 2 टेंट्स। मैंने चारों तरफ फेंस लगाए और फिर 2 टेंट्स लगाए और इस तरीके से घर बन गया। एवरी डे आई वुड गो आउट विथ माई डॉग एंड माई पैरेट टू डिस्कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। हर रोज़ मैं अपने डॉग और पैरेट के साथ जाता था डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइलैंड। Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel. Learn with Shirin Khazi.